taken your shower? And now you all might be waiting, eagerly waiting to begin with today's classes. So here I am, and today we are going to begin our class with English. Wow! One more new letter, isn't it? And so to just wind up our mood fast, let's recite rhyme once. सारे अल्फाबेट वाली rhyme एक बार बोलते हैं. I'm not talking about the phonic rhyme, normal वाली rhyme एक बार बोलेंगे and then we will begin our today's work. Okay? So let's begin. A, B, C, D, E, F, G. So whenever you are saying this rhyme, always say each and every letter clearly. L O M N O P E Q. No, L के बाद तो O आता ही नहीं है, isn't it? So each and every letter to be sung very neatly, properly and clearly. Okay? Let's begin. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P. Now see how I say L, M, N, O, P. L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. So now you all know your ABC, isn't it? Great. So let's begin with our today's class. Feeling all refreshed? Tummy full hai? Breakfast kiya sabne? Great. So class, today is 10th November 2020. So date is 10. This 11th is the November month. Very good. And 2020 is the year going on. And today is Tuesday. So what are we going to learn today? Today we are going to learn about alphabet I. Cursive formation. I know you all are very much aware about alphabet I, capital. So how we are writing the capital alphabet I? First we are making a standing line. Isn't it? Capital alphabets begin from the top red line. Very good. So first we are making a standing line. After that, अब कहाँ पे बनाना है हमें? कौन सी line बनानी है? At the top here, we are going to draw a sleeping line on this red line. So this is the one sleeping line. And here we are going to make the other one. So this is your capital I. Now, what is the sound of this alphabet? इस alphabet की sound क्या होती है? Can anyone tell me? Sound, हम हर alphabet की sound learn कर रहे हैं, isn't it? And what is the sound? When we are talking about any alphabet, जब हम किसी भी alphabet के बारे में बात कर रहे हैं, हम उससे related pictures या objects के बारे में बात करते हैं, तो what sound is coming with the name? जब हम उसकी picture का नाम बोलते हैं जो alphabet I से begin करता है, तो कौन सा sound आता है when we are speaking the name? So here are some pictures. I have drawn 4 only, so we will be discussing few more pictures. Now can you tell me the name of this picture? What is this? It's an igloo. Yes. What is an igloo? Igloo क्या होता है? See, winter season is going on now. Winter season begin हो गया है ना? अब क्या होता है? बहुत hilly areas जो होते हैं ना, जहाँ पे बहुत सारी snow होती है, वहाँ पे houses बनाए जाते हैं using that snow. उस snow की एक बहुत thick squares को काटा जाता है and using those thick square उनको इस तरह से form करके एक house बनाया जाता है. That house is called igloo. So basically ये जो house होता है, एक house होता है, इसमें लोग रहते भी हैं. So this house, it is made of ice. किससे बनता है ये house? See, the house which we live in, जिसमें हम रहते हैं, that is made of bricks, cement, then we have iron rods. ये सब चीजें लगाते हैं पापा जब house construct करते हैं. But the houses like these, one which we call igloo, they are made of ice. Okay, so what is this? Igloo. Now I am writing it here.
igloo. Clear? So please focus on the sound. जो मैम बोल रही है वर्ड्स, उनकी जो स्टार्टिंग साउंड है, द बिगनिंग साउंड. बिगनिंग मतलब जो फर्स्ट साउंड हमें सुनाई देती है, हमारे ईयर में कौन सी साउंड सबसे पहले क्लिक कर रही है, उस पे ध्यान दीजिए. Again I am going to say the name. Now please listen carefully. What is this? Igloo. What is this? Igloo. So can you tell me what is the first sound that comes to your ear? जो आपके ईयर को फटाफट से द फर्स्ट साउंड कौन सी सुनाई दी? Igloo. ई साउंड सुनाई दिया. वेरी गुड. सो नाउ अगेन अभी हम देखते हैं क्या सब में ई साउंड फर्स्ट आता है. नाउ व्हाट इज दिस? Scream. What is this? It's a scream. So again when we are talking about this scream, ठीक है. अब आइस आई की साउंड आ रही है ना, ई. Scream. We call it a scream. Now next is द से दवात. हिंदी में जो एक छोटी सी बॉटल होती है ब्लू कलर की, जिसमें हम अपना पेन डिप करते हैं एंड वी राइट. व्हाट वी कॉल दैट? व्हाट वी यूज इन दीज पेन्स? इन पेन में क्या होता है? इंक. अगेन ई इंक. सो व्हाट इज इट? इंक. नाउ व्हाट इज दिस? फ्रिज में होता है. वी यूज इट इन कोल्ड ड्रिंक्स, उसको ठंडा करने के लिए. आइस. So, when we are talking about these things, igloo, ice cream, ink, ice. Then we have insects. Insects क्या होते हैं? जो छोटे-छोटे से birds कहते हैं, sorry, छोटी-छोटी flies होती हैं. Then we have cockroaches, we have ladybugs. जो छोटे-छोटे animals होते हैं, जिनके 6 legs होती हैं या फिर उनके pair of wings होते हैं. Like we have हनी बी, हाउस फ्लाई. घर पे छोटी छोटी फ्लाइज होती हैं. फिर घर पे छोटे छोटे इंसेक्ट्स होते हैं, मच्छर होते हैं ना जो हमें काट जाते हैं. सो दीज ऑल आर कॉल्ड इंसेक्ट्स. अगेन इंसेक्ट्स. सो लेट अस राइट दैट हियर. इंसेक्ट्स. नाउ इफ वी आर रिपीटिंग देयर नेम्स, वी आर हैविंग इंसेक्ट्स. ई. इग्लू. ई. Scream, ink, ice. So all these letters, all these pictures, the sound, the beginning sound of their name is beginning from E. The first sound that coming to my ear is E. So the sound of alphabet I, the sound of alphabet I is ई. आपने पढ़ा है हिंदी में ई से इमली, ई इमली. तो ये वही वाली साउंड होती है. क्लियर? ई इंक, ई इग्लू, ई इंसेक्ट्स, ई आइसक्रीम, ई आइस, ई इग्वाना. इग्वाना एक छोटा सा क्यूट सा एनिमल होता है, दैट इज इग्वाना. अंडरस्टूड? नाउ कम्स द फॉर्मेशन. साउंड की बात हो गई. वी हैव लर्न द साउंड. कैपिटल आई आपको आता है. साउंड समझ में आ गया. दैट आई सेज ई. साउंड ऑफ अल्फाबेट आई इज ई. नाउ कम्स द फॉर्मेशन ऑफ दिस अल्फाबेट. सो हाउ वी आर गोइंग टू राइट दिस अल्फाबेट? नाउ सी दैट. सी, ऑलवेज द स्मॉल अल्फाबेट्स बिगिन फ्रॉम द लोअर ब्लू लाइन. इजंट इट? आपको यही बताया ना हमने. नाउ आई अल्फाबेट का जो कर्सिव फॉर्मेशन है वो सिर्फ इनटू ब्लू लाइंस में ही रहेगा. यू विल नॉट गो बियॉन्ड दिस ब्लू लाइन. ये ऊपर वाली ब्लू लाइन से ऊपर नहीं जाना एंड नीचे जो ब्लू लाइन है इससे नीचे नहीं आना. ओनली यू विल राइट बिटवीन दिस ब्लू लाइन. इन ब्लू लाइंस के बीच में ही आएगा आपका कर्सिव आई का फॉर्मेशन. क्लियर? नाउ लुक केयरफुली हाउ वी आर डूइंग. You have to begin from here, go up, उसी लाइन से नीचे आना है and like this. Is that clear? This is how you are going to write
cursive letter I. दोबारा देखिए how I have written. I have written it. I'll erase and write once again. See, यहां से लोअर ब्लू लाइन से बिगिन किया, गो टच द अपर ब्लू लाइन, नीचे से स्टार्ट करके ऊपर टच करेंगे, उसी लाइन पे यू विल कम बैक और फिर यहां आके अलग होना है उससे, ठीक है। हाफ रास्ते तक आप उसी लाइन पे आएंगे एंड देन यू विल पुट योर डॉट अगेन। यहां से स्टार्ट किया, ऊपर गए, जब नीचे आ रहे हो इसी लाइन पे आपको ओवरलैप करके आना है। हाफ जब आप वापस आ जाओगे then you will turn back like this and your dot. This is how you are going to do the formation of cursive I. Clear? I'll show you this in your notebook also. Now let us first see the today's class work. So today in the book, so as you all are having this book, second book of English. Now in this book you will open page number 32 and 34. One second. Yes, 32 and 34. So open your book page number 32 and 34. So when you will open these two pages, I'm repeatedly saying, I know it's not working. So page number 32 and page number 34. Open these two pages. You will find your work related to alphabet I. Finish that as your today's classwork, and in your homework I'm going to give you two homework today. So one for today and one for tomorrow. आज का homework होगा, you are going to practice the formation of letter I, and for tomorrow's homework just see what is your tomorrow's homework. Okay, a practice work which I am assigning you, but वो work कल ही करना है. Don't be in a hurry to finish it today. आज का work सिर्फ letter I है. The other work will be for tomorrow. Okay? So class, now let's see how we are going to write cursive I in our notebook today. Clear? So first we are going to write today's date, that is 10th November 2020. After writing the date, you are going to write HW here, because the work which you are doing in book is your classwork and the notebook is your homework. Now I says E. What is the sound of I alphabet? E. E igloo, E ink pot. So draw these pictures and color them beautifully. Now see how we are going to do the formation of cursive I. Can you see some dots which I have put here? Now what you will do, start from these dots, because I told you all the cursive letters will begin from the lower blue line. Now when we will begin, यहाँ से आपको start करना है, go slanting and come down, उसी को repeat करते हुए. So like this, and this is the alphabet that is to be written between these blue lines only. दोनों blue lines के बीच में लिखेंगे. Only a dot will come between the top red line and blue line. So see again, like this, go up and come down. So this is your cursive letter I. Clear? अब एक बहुत गलत प्रैक्टिस है लिखने की, वो ये है कि आप ऐसे करते हो. No, this is wrong. You will not do it like this. You will go up और यहीं से you will come down and turn. This is your correct formation of cursive I. Is that clear how you are going to do this practice? Go up and come down, and this letter to be written only between these two blue lines. कोई इससे बाहर नहीं जाएगा, ना ब्लू वाले ऊपर वाले से ऊपर जाना है और नीचे ब्लू लाइन से नीचे नहीं आना है. So only touch these both blue lines, and like this you will practice your cursive letter I. Is that clear to all of you? So this is your today's homework, that is 10th November. Now as we did earlier, we are going to do a practice of these four alphabets that we have finished, that is E, F, G, H. So what you are going to do, this work you will do tomorrow. Clear?
So that is 11th November 2020. ये आपको कल का होमवर्क दे रहे हैं मैम. यू विल नॉट डू इट टुडे. आज आपको सिर्फ आई की प्रैक्टिस करनी है. टुमारो यू विल डू दिस. नाउ हाउ यू आर गोइंग टू डू? मेंशन द डेट एंड राइट HW. सो प्रैक्टिस वर्क आप खुद नहीं कर रहे हैं, सो मैम इज गिविंग यू. नाउ हाउ यू विल डू? यू विल स्टार्ट इट लाइक दिस. E, then F. You all remember these formations? Then G, H. Again I am telling you, E, F, G, H, E, F, G, H. Is that clear? So your today's work, you are going to practice the formation of alphabet I like this. Again, if you want to see once again. Go up, come down like this. Then go up, come down. But आप वहीं से ही वापस आओगे on the same line. अलग से line नहीं form होगी. This is how you will go up first and then you will come down. Is that clear? So this is your letter I for today's homework, and tomorrow you are going to practice the formation of these 4 alphabets, one full page like this. E, F, G, H. Understood everyone? Is that clear? So class, you have understood how you are going to finish your today's notebook work, that is the formation of letter I. सिर्फ आज वही homework है. The other work, that is the practice of letter E, F, G and H, you will do tomorrow. So if you remember in the previous work also I gave you practice for letter A, B, C, D. So now this time we are going to practice E, F, G, H. And in the next class we are going to practice all those letters which we will be completing till that class. Is that clear? This is how learning and practice will go side by side. Okay? So now please finish your work and get ready for the next class. Bye all. Take care.